Hello, everyone. Hello, hello. Hello, everyone. Good morning. Good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. In the YouTube, there is a chat box. You can chat in the chat box. Hello, everyone. We will start after 3-4 minutes. But for the time being, those who are live, just a request that please chat in the chat box, YouTube chat box. Say hi, hello. Hi, hello, hello. Hello, Gaurav. Is there any problem in the link? Good morning, good morning. Can you hear me? You can't say anything because it's YouTube live. You can chat. Hello, Gaurav. Can you hear me?
Everything is fine. Okay. Just wait for a few minutes, maybe 3-4 minutes. We will start at around 11:10. It's 11:04. We will start after 6 minutes. Okay. Is there any problem with the YouTube link? Even no link is required. Whenever anybody will go on my YouTube channel, they will be able to see this. But still, whatever mail I sent, whether there was any problem with the YouTube link, Gaurav? Okay, good. But still, there is no link required. If the student just go on Prakash Saraf official YouTube channel, they will be able to see the live. But still, I shared the link. We will start exactly after 4 minutes. It's 11:06. We will start at 11:10. Hello, everyone. Those who are joining, just chat in the chat box, YouTube chat box. You can say hi. Good morning, everyone. Those who are joining live, please say in the chat box, hi. Hello, can you hear me?
We will start just after 2 minutes. Just last 1 minute. I think let's start. So what is our objective of today's session? There are many students who will be appearing for CIMA exams. I will say never attempted CIMA exam earlier. Even though there are so many videos uploaded on YouTube about the CIMA case study, what they give, how to study, what is the passing criteria, what type of questions they give, how much study hours required, what type of questions they give in the exam, what type of competency we need to develop to pass the exam, how much hour we need to study, how can we prepare, how we will be conducting our classes for me, August 2024 term. Then I can say from top to bottom, everything. First of all, I will discuss, which will take approximately 1.5 hours. And then after that, since the pre-seen material for management case study is already out, and those who are registered, I have already shared the basic notes relating to that. So we will discuss the pre-seen material for me and August 2024 for next 1.5 hours approximately. And in between, if anybody has any specific doubt, you can chat in the chat box and I will be helping you to clear your doubts, whatever you will have during the entire session. So the first thing is that the CIMA case study exam, whether it's an operational case study, whether it's management case study or strategic case study, all case study exams are very, very practical application of, what do you say, whatever we technically study. If suppose I will say that in management case study, you have the subject financial accounting, financial reporting. And in the financial reporting, there are so many IAS, IFRS are there. Suppose presently when we are doing the classes for accounting area, because CIMA students should be doing those classes, I am continuously asking them. So I have taught in the class non-current assets, IAS 16, IAS 20 government grants, IAS 40 that investment property, then IAS 23 borrowing cost, IAS 38 intangible assets, IAS 36 impairment of assets, and IFRS 5 assets held for sale and discontinued operations. These are 5, 6 or 6, 7 IFRS or IAS we have already covered in our classes. Relating to that, the case study which is released by the institute, there is very prominent question can come. If you ask me normally relating to IAS 16, IAS 36 and IAS 38. Those are the 3 IAS IFRS which are very much relevant with your case.
But then they are not going to ask a define property, plant and equipment IS 16. They are not going to ask a define intangible assets. They are not going to ask that what will be the treatment for impairment. These are technical type question. The case study exam means application of technical knowledge in practical life. Because when we work, we don't work like that. When we work in practical world, then in that case, whatever we studied technically, we need to apply that in the business world. So the question will be that, suppose the name of the company is, I forget the name, that company is, you can say PBSC. They are building houses, flats, accommodation, and then they are giving on rent to the students. That's the basic structure of the case study. So obviously they have 172 buildings and all that all over in a city. And regularly they develop new buildings. If there is old building which is not working well, there may be some changes in the prices of the building in the market. There may be decrease in the market. The students are not registering in the college and universities much. So their buildings are idle. The vacancy rate is very high. They will be creating a scenario like this. And they will be asking if we are incurring these expenditures, whether they can be capitalized. Or if this is the situation that the market is not good, or the problems the company is facing, the vacancy rate is high, whether the assets are impaired, whether the company need to go for the impairment of the assets. If they will be going for impairment, how they will conduct the impairment, then how they will be accounting for the impairment. If the impairment will be happening, how it is going to affect the share prices of the company, how it is going to affect the business of the company. Going forward, if the impairment is happening, what type or what decision the company should take. It's not a question whose answer are written in any book. The questions are not technical. The questions are application of your technical knowledge. Like I will say, Gaurav, when you joined for operational case study with us, I'm not saying that there was any problem in you or me. You were very, I mean to say, what I use the language, very tensed. Sir, I need to pass. I have to complete CIMA. I need to pass operational case study. Sir, what I should study? Should I study E1, P1, F1 fully? Should I focus like the questions which we are doing in the class, whether we will be able to pass or not? So many things were there in your mind. But when you have given the exam and when you passed out, then definitely the things are much clear. I can say that suppose somebody couldn't pass. The question is not that key, since you passed, you know this, or somebody has not passed the exam, then he or she don't know this. We know that the CIMA case study exam are not technical study. I'm not saying technical study is zero. Technical study, basic understanding, technical knowledge required. And I always say that in management case study, the problem will be there with financial reporting, the accounting part. Because normally those who are giving management case study exams, they are not from accounting background. They are from MBA background. They are from different field. And their accounting knowledge is very poor. Even when I am taking the classes for accounting separately, asking the management case study student to attend all those classes, normally the student don't attend. And if those who are attending, they are not studying properly. And at the time of exam, when the case study exam will be there, say tomorrow, today the student will ask questions only relating to accounting. Like that, the case study exam is only accounting. Because the problems will be there with the student. I am taking CIMA case study, management case study classes since 2015. In term after term, every term I realized that the student knowledge in financial accounting, financial reporting is very poor. Even though I teach so many things now separately to them, even though that is not required so much. But I'm teaching the financial accounting part separately in the extra classes. But normally I've seen that students don't focus so much.
So that's the problem in the CIMA case study, that accounting part is slightly technical. Even the questions will not be like that technical. But if you are technically not slightly better in accounting part, it will be difficult for you to answer the questions which will be coming in the exam. Not that the accounting part, entire paper will be coming. Around 20-25% questions will be relating to accounting part, but they are the deciding factor for fail and pass. So when I'm teaching continuously the accounting part, already 20 days, we have already discussed some IS, IFRS. The focus of the CIMA student is not that much which is required. Not only Gaurav, you are not attending the classes, you are doing the recordings, but those who are doing the live also, they are not giving proper efforts. And then at the end, they will curse. And according to me, what is the purpose of getting a degree? अगर कुछ आता ही नहीं है, if whatever in the practical life we need to deal with and we can't solve, then what is the purpose of getting CIMA qualification? So in operational case study, the P1 part need to be studied slightly more detailed. In management case study, the F2 part need to be studied more detailed, because that's a trick. In strategic case study, I will say that F1, F2, F3 all are same. Because the strategic case study, assuming that a student has studied operational, you will say that, sir, I am going in strategic case study from exemption route. ठीक है? Exemption आपको मिला है because you have work experience of 12-15 years or you are CA, CWA. तो उतना technical knowledge आपके पास है. Maybe you have studied 5-10 years back. कोई problem नहीं है. CIMA case study does not based on strategic case study, E3, P3, F3 syllabus. It's more practical, more business oriented. But operational and management case study slightly bent with technical aspect also. But then the CIMA Institute says that they are asking the simulate workplace problem solving. In the workplace, whatever problems the organization face, those problems they are going to ask in the exam, which is not written in any book, which is not a bookish study, which is purely application of your practical knowledge. If they are asking that the company is not able to manage their staff, the students are complaining relating to maintenance of the building, relating to upkeep of the equipment which are kept in the rooms. And there is a social media, this thing and all that. There is a huge problem in the company. What should be done? Why it has happened? What will be the new course of action which the company needs to take so that they can remove these problems? Nowhere this question answer written. It's an HR related thing, human resource related thing. Maybe the staff are not satisfied. They are not working properly. They are not properly remunerated. Maybe they are not appointed properly. Their recruitment selection process was not correct. Maybe their evaluation process is not correct. For that reason, they are not solving the issues. Or maybe they are solving the issues, but the problem is not with the staff. The problem is with the students or something like that. You need to find out what they have written in the scenario. And based on that, you need to judge your answer. You need to write your answer. That answer write-up is not based on any bookish or technical study. That is not based on any technical aspect. वो आप कोई भी किताब खोल लीजिए, F2, E2, P2, whatever your syllabus, you will not be finding any answer for that. Because that's a business problem they are saying. And you need to deal with the business problem. Suppose they are developing a new property. They have a, you can say maybe in-house team for a development, or maybe they have hired a contractor to construct the building, a new building in a new place. But they are facing some problem in the construction, maybe from the local laws, maybe from the government, maybe from the contractor side, maybe somebody within the organization staff. How can you deal with that issue? Why that problem arises? What we should be doing so that in the future this problem should not be arising? All the questions are business problems. They are relating to accounts, they are relating to finance, they are relating to management, they are relating to HR, they are relating to marketing. वो सब business issues है, problems है, opportunities है.
और आपको उस प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज का आंसर देना है विथ अ कॉमर्शियल एंगल, विथ अ बिजनेस एंगल, विथ अ प्रैक्टिकल बेंट इन माइंड। और उसका आंसर कोई फिक्स्ड नहीं है। इफ आई एम गिविंग एग्जाम, आई हैव अ डिफरेंट व्यू, आई एम राइटिंग अ डिफरेंट आंसर। You are giving exam, you are having a different view, you are writing a different answer. We both may be correct. There is no fixed answer for any specific question. Answers आपका फीलिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका सिचुएशन का एनालिसिस, आप उस सिचुएशन में हाउ यू विल डील विद दैट, उसके ऊपर डिपेंड करता है, which comes with practice. Most of the times it happens in management case study खासकर. Whenever I am teaching operational case study, student seriousness level is lowest. Management case study is mediocre. And strategic case study seriousness level of the student is at the highest level. Always I have seen, why I don't know. Even though strategic case study students are the most busiest person, because the average age of the student in strategic case study is 35 plus. Some are 50, 55, 60 years. What they will study in life. So much experience, maybe more than mine, experience with them. But when I'm giving the homework and asking them to write the answers, 70 to 80% writing the answers in time, doing the homework, attending the classes, I generally feel that how they are able to be so much focused. मेरे को मन में ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी केस स्टडी इतना बिजी है, फैमिली है, जॉब है, हाई लेवल का जॉब है, तो वहां पर कोई टाइमिंग भी नहीं होता। उसके बावजूद क्लासेस करना, होमवर्क असाइनमेंट्स करना, टाइम पे सबमिट करना, एंगेजिंग इन द डिस्कशन, उन लोग का लेवल अलग होता है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी केस स्टडी में सिंस आउट ऑफ द टोटल बंच ऑफ स्टूडेंट्स 70 to 80% आर सीरियस, द पास परसेंटेज इज 70-80%. But in management case study, less than 50% is serious. The pass percentage is around 50-60%. The institute pass percentage in management case study is around 20-25% low. Reason you can understand what I am saying. In operational case study, same. Like Gaurav, when you took the operational case study classes, there were 6 students. Only you and Laksh joined the classes regularly, written the answers and everything. Balance 4 का पता ही नहीं है कहाँ है. Just they have attended first class, not a single class attended, not a single answer written. So you will say that, sir, they passed or failed. अरे भाई, उनका पास फेल मतलब है क्या? रवि जी, आपको भी पता है क्या पहले स्ट्रैटेजी केस स्टडी किए थे, क्या बदमाशी किए थे? तो ये सब मैं ऐसा सोचता हूं कि इफ द स्टूडेंट विल से दैट सर आई विल पास और नॉट, इट्स ऑल योर एफर्ट सर। और आपका जो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जॉब है, आपकी फैमिली है, वो सब थोड़ी ना खत्म हो रहा है। लेकिन अगर होमवर्क दिया जाएगा, आप होमवर्क सबमिट नहीं करोगे, लेट से करोगे, करोगे ही नहीं, सर मैं ये वाला बाद में दूंगा, सर मेरा ये हो गया, वो हो गया, इसको कोई सुन रहा नहीं है। एग्जाम तो उस एग्जाम के दिन होएगा। सो आई जनरली फील दैट कि ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट केस स्टडी स्टूडेंट्स नीड टू इंप्रूव। इफ दे विल नॉट इंप्रूव, आई कैन नॉट हेल्प देम टू पास द एग्जाम। अंडरस्टैंड? आप सोचेंगे आप केवल क्लास कर लेंगे और आप क्लास में समझ लेंगे, नहीं होएगा। When we discuss, I say something, you also start engaging in the class. You are saying something, somebody else is saying. We understand. किसी का कोई डाउट नहीं है. But writing that thing in your own after understanding, right, is a different ball game. एक चीज आपको पता है और एक चीज आपको पता है उसके बाद उसको आपको लिखकर सबमिट करना है, दोनों में बहुत अंतर है। So when we discuss in the class in operational management और strategy case study, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, किसी को कोई डाउट भी नहीं होता है। प्रॉब्लम कहां आता है? दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इन राइटिंग, दे आर नॉट डूइंग द होमवर्क, दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस, they are not submitting the assignments, they are not helping me to evaluate their answers, they are not helping me to tell them that where they are wrong, where they need to improve. Gaurav ji, when you written the answers for core area A, B, C, D, E, F, mock paper 1, 2, 3, 9, and in 9 you can say every paper has 2-3 questions with different parts. इतना आंसर सारा आपने लिखा, प्रैक्टिस किया, तब तो रिजल्ट पॉजिटिव आया ना। It's a simple cause and effect relationship.
It's practical. Those who are working professionals, they can understand very well whatever we will discuss in the class. But we cannot pass this exam if we don't practice in writing. To pass the exam, you need to practice on your own, because in the exam, nobody will help you. In the exam, you have time pressure. In the exam, the situation is not being discussed between 10, 15, 20 persons. Nobody is helping you. So thinking, digesting, analyzing, writing, time pressure, all these things can be managed when we will study, when we will do mock papers, when we will do right answers, when we evaluate what the model answers, when we work on our weak areas, then we can pass. It's not a difficult exam. Believe me. I'm teaching so many courses, ACCA, CIMA, CMA, CPA, so many things. सारे एग्जाम सीमा का केस स्टडी से डिफिकल्ट है. सारे डिप्लोमा IFRS इज डिफिकल्ट देन सीमा केस स्टडी. If you say that CIMA ka E1, P1, F1 exam, E2, P2, E3, P3, F3, difficult than case study. In exam, CMA US Part 1, Part 2 exams, far difficult than the CIMA case study exam. Because वहां पर आपका टेक्निकल स्टडी बहुत ज्यादा चाहिए. आपको टेक्निकली चीजों को याद रखना है, मगअप करना है. वहां पर आपका परिश्रम, एफर्ट्स बहुत ज्यादा है. सीमा में तो उतना एफर्ट्स है ही नहीं, लेकिन जो है वो तो लगाना पड़ेगा ना. कि आप सोचेंगे कि मान लीजिए आप केवल रीड कर लेंगे, मैं क्वेश्चन दूंगा, आंसर रीड कर लेंगे, फिर कभी कभी क्लास में आ जाएंगे, कुछ पूछ लेंगे, या नहीं भी कोई से पढ़ रहे हैं, बस आप रीड करके रेडी हो जाएंगे. ये असंभव है. आपको आंसर्स लिखना होएगा रेगुलरली, पूरे 2 महीने, जितना दिन एग्जाम बाकी है, और मॉडल आंसर से इवेल्युएट करना होगा. कोई सीनियर है आपका, कोई फ्रेंड है, या कोई टीचर है, मैं वो कोई, उसको इवेल्युएट करने के लिए देना होएगा. वो उसको इवेल्युएट करेगा, आपको मार्किंग देगा, आपके रॉन्ग प्रॉब्लम्स को बताएगा. अब बार बार इस पे वर्क्स करोगे तभी आप एग्जाम पास हो सकते हो. और इसके लिए कोई दिन में 5-7 घंटे नहीं पढ़ना है तो भी नहीं पढ़ना है. इसके लिए मन से, शिद्दत से, रेगुलरली 2 आवर्स स्टडी आज से चालू है. Maybe there are students who have already joined management case study. I am to continuously teaching the accounting part, how much you are studying or not. But from now, when the case study is released and we start preparation based on the pre-seen material, if after that the student is not becoming serious, most of them will not give exam. And if they give exam, they will not be able to pass if they don't become serious. You have to study every day 2 hours. आप अगर नहीं पढ़ोगे नहीं होएगा. अगर आपका मार्क्स 80, 85, 80 से 90 के बीच में आता है, मैं नहीं बोल रहा कि आपने अच्छा पढ़ाई नहीं किया, लेकिन हम लोग को लगता है कि 90 के प्लस आने से देयर वाज नो टेंशन इन योर माइंड दैट यू मे नॉट पास इन द एग्जाम. सो कहीं ना कहीं तो इंप्रूवमेंट और करना है. सो गौरव जी, मैनेजमेंट की स्टडी में ऑपरेशनल की स्टडी से ज्यादा नंबर लाना है. 90 प्लस वी हैव टू स्कोर. रवि जी, स्ट्रैटेजिक केस स्टडी में चुपचाप से मन से पढ़ना है. आप बोलेंगे सर आप मेरे को बस पास करा दीजिएगा. मैं तो पास कराने के लिए बैठा हूं यार. आई ऑलवेज से दैट कि इफ यू विल पास, द बेनिफिट टू यू इज वेरी लेस. इफ यू विल पास, बेनिफिट टू सराफ एकेडमी इज फार ग्रेटर देन, यू कांट इमेजिन द बेनिफिट. सो मेरा तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है कि आप सबको पास कराना है. आपका तो ये सेकेंडरी सब्जेक्ट हो सकता है, मेरा तो प्राइमरी सब्जेक्ट है. लेकिन आपको मेरी बात तो माननी होगी ना. आप नहीं मानोगे तो मैं उसको कैसे हेल्प करूंगा. सो इट्स यू कैन से. आप बोलेंगे सर बार बार आप यही बात बोलते हैं, ये भी इसी बैच में भी मैं बोल रहा हूं. कहाँ सुनता है स्टूडेंट यार. मेरा कोई भी बात स्टूडेंट ज्यादातर तो सुनता ही नहीं है. मैं बोलता हूं कि भाई आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप मेरी टीम को मेल डालेंगे, मुझे मैसेज नहीं करेंगे. और उनको भी मैसेज व्हाट्सअप मत करना. आपका वीडियो नहीं चल रहा है, नोट्स नहीं है, तो आप मेल करेंगे. मजाल है कोई स्टूडेंट मेल करे, सर वीडियो नहीं चल रहा है. जबकि हर बैच में पहली क्लास में ये बोलता हूं यार. कहाँ सुनते हैं स्टूडेंट कि भाई स्टूडेंट को कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आपको हमें मेल डालना है, एंड यू विल बी रिप्लाइड इन द मेल बाय माय टीम मेंबर्स इन ऑफिस आवर्स, नॉट ऑन संडे. वी आर वर्किंग ऑन संडे, दे आर नॉट वर्किंग ऑन संडे. आप भी संडे को वर्क नहीं करते. छुट्टी का दिन छुट्टी का होता है, तो स्टाफ जब रहेगा तभी तो वो हेल्प करेगा ना. आप बोलेगा मैंने व्हाट्सअप किया कोई रिप्लाई, संडे को ऑफिस में फोन रखा हुआ है, आप क्यों व्हाट्सअप कर रहे हैं. व्हाट्सअप देखा कोई नहीं देखा. So for any technical problem with our classes, I will request you just mail at our mail ID. My team will do the needful as fast as possible. Believe me.
लेकिन आप मेरे को केवल सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी के लिए मैसेज करिए, कॉल करिए, आई एम अवेलेबल। मैं तो हर समय आपके लिए हूं, कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। सो सीमा इंस्टीट्यूट इज सेइंग दैट द केस स्टडी एग्जाम इज अ सिमुलेटेड वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स, और वो वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स का जवाब आपको प्रैक्टिकली देना है। दे आर सेइंग दैट दोज हु आर एफएलपी स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी, they need to solve the assignments for E2, P2, F2 area, then only they are eligible to give the exam. असाइनमेंट में कोई झमेला नहीं है, जस्ट टिक लगाना है यार, कोई पढ़ाई नहीं करना है। लेकिन टिल द टाइम यू डोंट कंप्लीट द असाइनमेंट्स, यू आर नॉट अलाउड टू गिव मैनेजमेंट केस स्टडी एग्जाम। But if you are straight cut route, you have 5-6 years of experience, and you have straight away gone into CSAP route, senior executive professional route, then in that case आपको केवल 2 ही एग्जाम देना पड़ता है, मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी केस स्टडी, नो E2, P2, F2 असाइनमेंट सॉल्विंग। Or there are some normal CIMA students, they are doing the CIMA from the beginning. They are giving all the exams, BA1, BA2, BA3, BA3, the beginning level, then operational level, वो लोग नॉर्मली कर रहे हैं। लेकिन इस अपने बात कर रहे हैं मैनेजमेंट केस स्टडी का। सो मैनेजमेंट केस स्टडी में आपका कोई जनरली कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज इट्स अ थ्योरी बेस्ड एग्जाम्स, और आपको सिनेरियो दिया जाएगा, सिनेरियो इज कॉल्ड अ ट्रिगर, सिचुएशन दिया जाएगा, और इस सिचुएशन के बेसिस पे आपको 2-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एंड वो 2-3 क्वेश्चन आपको आंसर्स करना है, यू नीड टू आंसर इन द गिवन टाइम। एग्जामिनर्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे टिप लिख कर रखा है कि भाई आपको प्रीसीन मटेरियल अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। प्रीसीन मटेरियल आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड 3 days बैक विथ ऑल ऑफ यू, even some write-ups, some notes, some videos already. I assume that today when you are joining the class, when you have already gone through the pre-scene material, somebody will say that, sir, I am not your student. Sir, CIMA pre-scene material is freely available on Google. You type CIMA pre-scene MCS May and August 2024 Google में freely available है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर आई एम नॉट योर स्टूडेंट, आई हैव नॉट रेड। जब प्रीसीन आ गया, रीड करना चालू करना पड़ेगा, व्हाट इज द इंडस्ट्री एंड ऑल दैट। And I have mailed through those who are registered with us. Read the pre-scene, read the notes which I am sharing. So pre-scene अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। The examiner are saying, come into the exam understanding the industry and the company. That's my job. The understanding the industry and the company, उसके ऊपर write up मैंने आपको already दे दिया है, आज डिस्कस भी करेंगे। Manage time and make sure that you do not run out of time in sections they know well, and answers which is asked by regarding the questions very carefully. 2 बात एग्जामिनर बोलते हैं कि सपोज रिलेटिंग टू अ ट्रिगर, रिलेटिंग टू अ सिनेरियो, दे आर आस्किंग 3 क्वेश्चंस ABC. नाउ A you know very well, and B and C you don't know at all. So what the student do blunder, they are writing the answer for A 90% of the times, 95%, or B or C they are writing, they are leaving it, or B or C they are writing only 2 lines. We cannot pass the exam like that, because A portion is only, A part is only maybe 30%, 40%. So out of 40%, you can get 40% marks only. How you will get the balance marks? So when you know something, don't waste extra time on that. Complete it fast. Give that much time only which is allowed for that question. Give proper time to B and C part also. And normally, when the question is asked, what they are exactly asking, understand. Build up your answer according to the requirement. Suppose they are giving you detail in the exam that the company is incurring these further expenditures in their existing building. In the existing building, they are doing some renovation, they are doing some repair, वो लोग extra खर्चा कर रहे हैं, खर्चा का detail दे दिया, ठीक है? And they are asking you whether these expenditures will be capitalized or whether they will be charged to PL account as an expense. Now, suppose a student is saying that these expenditures will be capitalized, they will be added to the asset. चलो भैया कुछ तो बोला, because they are asking capitalize होगा कि नहीं, उसने बोला. One another student is saying that every organization has property, plant and equipment. They have also that, they have this building. They are asking you these expenditures to be capitalized or not. You are writing something which is not the part of the answer.
वो लोग बोल रहे हैं ए लिखने के लिए, आप बोल रहे हैं जेड, कोई नंबर नहीं है उसके ऊपर। कैपिटलाइज होगा कि नहीं, आप केवल इतना लिखोगे कैपिटलाइज होगा, क्यों? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? फॉर एनी एक्सपेंडिचर टू बी कैपिटलाइज्ड, the expenditure should have the effect of increasing the economic benefit from the asset. The economic benefit may be increase in the life, may be increase in the revenue more than a year from the assets. Maybe it's saving in the expenditures, operational expenditure more than a year. If that is going to give economic benefit, increase in economic benefit for more than a 1 year, then only it can be capitalized. Now you need to take one by one item and you need to give your logic that why it is going to have the effect of increasing the economic benefit. Then you will say that it will be capitalized or not. तब तो नंबर मिलेगा ना. Suppose somebody will say that, sir, I don't remember this was discussed in IAS 16. You write IAS 16 or doesn't write, doesn't matter, man. IAS 16 का नंबर लिखने थोड़ी ना बोल रहे हैं. वो लोग तो लॉजिकली बोल रहे हैं कि ये कैपिटलाइज होगा कि नहीं. Now this is slightly technical because you need to know that कि when any further expenditure can be capitalized, when it has the effect of increasing the economic benefit from the assets. तो आप अगर ये बात जानते नहीं है तो आप तो लॉजिकल आंसर नहीं लिखोगे. तो टेक्निकली थोड़ा तो बेटर होना पड़ेगा F2 के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. लेकिन अगर आप टेक्निकली बेटर भी है, प्रैक्टिकल वे में आंसर नहीं लिख रहे, जो पूछ रहे वो नहीं लिख रहे, you will not be getting the marks in exam, which is a major issue in any case study in the exam. Operational case study, management case study, strategic case study. क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं हम उसका आंसर नहीं दे रहे हैं, हम कुछ और ही लिख रहे हैं. It is related, but it is not the requirement का आंसर. So they are very particular that you need to write the answer as per the requirement. Understand the requirement properly. Answer which are not applied to the case will not give you any marks. A good level of knowledge of the 3 management syllabus. Management syllabus matlab E2, P2, F2. According to me, mainly F2 is essential. Candidate must be able to apply their knowledge to a variety of situations. So they have an in-depth knowledge of the subject matter. That subject matter is, you can say, unseen scenario. Before 2020, CIMA used to say that they are testing your skills, competency skill, professional skill, then communication skill, business skill and all that. From 2020, they are saying that they are going to test your knowledge on the basis of 5 core competencies, 5 core areas. Those core areas are those skills only, but written in a different way. Now, we will be discussing our entire discussion in the class based on core areas only. But what the examiner are saying, rather than focusing on the discussion between the different core areas, the most important skill on the day of exam is to able to answer the task and set the sufficient application. Yesterday also, when I was taking the class for strategic case study, one student who is doing CIMA for 6-7 years, he said that, sir, I remember that earlier they used to say that you need to have this knowledge of the communication skill, professional skill, then what do you say, business skill and all that. तो मैंने बोला भाई पहले भी जब वो लोग बोलते थे तो भी आपको कोई स्किल के लिए कुछ लिखना थोड़ी ना पड़ता था. फॉर एनी पर्टिकुलर स्किल डू यू नीड टू राइट अ पर्टिकुलर सेंटेंस और एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं था. सिमिलरली अभी जब कोर एरियाज है तो आपको ये थोड़ी ना जानना है कि क्वेश्चन इज कोर एरिया 1A और B और C और D, क्या मतलब है? Whatever the question is there, we need to answer. And if we are writing the answer for the question practically, understanding the situation, all the core areas will be covered. So स्टूडेंट को ये सब ध्यान नहीं देना है कि कोर एरिया 1 का आंसर है कि कोर एरिया B है कि C है. नो पॉइंट. ना तो मैं ध्यान दूंगा ना आप दीजिए. यू कैन से दैट सिलेबस को कवर करने के लिए, क्वेश्चन को देने के लिए आई विल बी यूजिंग कोर एरियाज, बट देन डोंट फोकस कि ये कोर एरिया A है B है. Gaurav, when you gave the exam for operational case study, did you analyze at the time of giving exam this is core area E or F or A? What do you say, Gaurav? क्या आपने ये सोचने की चेष्टा की थी क्या एग्जाम में, ऑपरेशनल केस स्टडी में, कि दिस इज कोर एरिया A का क्वेश्चन है, ये C का है, ये D का है? सच्ची बोलना. Hello, Mr. Gaurav. Are you there in front of the screen?
यूट्यूब में चैट थोड़ा सा डिले होता है, टाइम डीके होता है। नो सर, लेकिन वाइल स्टडिंग यू वेर ऑल्सो फोकसिंग ऑन कोर एरिया ABCDEF, वहां F तक था, यहाँ E होता है। एक बार स्टूडेंट बन जाते हैं हम लोग, लेकिन एग्जाम में आपको कोई मतलब नहीं है ये कोर एरिया 1 है कि 2 है, A है कि B है, इससे मतलब नहीं। द सीमा केस स्टडी एग्जाम इज बेस्ड ऑन अ प्री सीन मटेरियल which is released by the institute around 40 to 45 days before the exam, like the pre-scene material released on Thursday for management case study, which was 27th of March. And the exam is, I think it is on, I don't remember, exam is or around, I think 17, 18, 19 or 18, 19, 20 May. यानी कि around 40, 45 days before you are getting the pre-scene material. That pre-scene material focus on a particular industry, on a company, their business model, their financials, their organization structure, their directors details, their financials, some newspaper clips, articles, competitor information, and some social media updates relating to the industry or relating to the company. What people are saying about the industry or the company on Facebook, Insta, or anywhere, any social media platform, what the people are saying. That is a pre-scene material. And in the exam hall, based on the pre-scene material, they will be preparing different question papers. Those question papers we can say unseen portion. Those question paper we can say unseen portion. Unseen part. So we can say that those unseen portion will be given in the exam. On the exam day only you will be getting that unseen portion. Based on the pre-scene, they will be giving you unseen portion in the exam. And that unseen portion is basically triggers and scenarios. And based on that, they will be giving you questions. So we can say that those triggers and scenarios, or the unseen part, we will be getting on the day of exam. And those unseen and triggers and scenarios, they are making 6-7 bundles. They are making 6-7 types of papers. Any student when giving exam, they can get anyone, any unseen. So there are some students still focus on iska exam mein kaun sa unseen aaya tha. That is named as variant 1, variant 2, variant 3, variant 4, like that. वो variant के नाम से famous है. So स्टूडेंट लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया में सब जगह, भाई तुम एग्जाम दिए थे, यू गिव एग्जाम ऑन वेडनेसडे, विच वेरिएंट केम, यू गिव एग्जाम ऑन थर्सडे, विच वेरिएंट केम, आई एम गिविंग एग्जाम ऑन फ्राइडे. कोई फायदा होता नहीं है इससे. इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. Because somebody can tell you the question was on, say, impairment. The question was on group accounting. उससे क्या फायदा, वो तो हम लोग को भी मालूम आएगा. Whatever the unseen portion is not 1 or 2 lines. There is a big detail in unseen 2, 2, 3, 3 pages. So वो unseen portion को आप एग्जाम में खुद देखकर समझोगे तभी आप आंसर लिख सकते हो. वो unseen portion अलग अलग पेपर में अलग अलग लेवल का होता है. In some paper, the unseen portion, the question based on that unseen portion are slightly difficult. वो difficult होते हैं. And in some of the variant, the unseen portion is slightly easier. तो अभी एग्जामिनर ने भी क्या किया है कि बोला भैया गौरव is giving exam by difficult unseen variant and Ravi is giving exam by an easy unseen variant. तो बोलता रवि for passing the exam need to score more marks. बट गौरव नीड टू स्कोर लेस मार्क्स. वो लोग बोलते हैं कि आपका नंबर वेटेड एवरेज होएगा. वॉट एवर स्कोर गौरव विल अटेन, गौरव का मार्क्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑफ द इंस्टीट्यूट बाय 105, 110%. सपोज गौरव इज स्कोरिंग 90 and the weight for the Gaurav paper is 110%.
So 90 into 110%, the institute will say Gaurav scored 99 marks. Actually गौरव ने 90 लाया था, लेकिन 110% वेट है. मान लीजिए रवि ने एग्जाम दिया सिंपल वेरिएंट वाला, और उसमें इंस्टीट्यूट हैज टेकन अ वेट ऑफ 95%. सो सपोज रवि स्कोर्ड ऑल्सो 90, बट रवि का मार्क्स अनाउंस्ड होगा 90 into 95%, which will be around 85, 86. Whatever marks you are announced by the institute, they are weighted average marks. Weights are decided by the institute based on the difficulty of the variant. We don't know which variant is more difficult, which variant is easier. ये हमें नहीं मालूम है. ये इंस्टीट्यूट का अपना कॉल है और वो सॉफ्टवेयर से होता है. The weighted average marks for passing the exam is 80 out of 150. 150 का पेपर होता है, 80 is the pass marks. So you can say average score 80 by 150 is 53%, but that 53% is not correct. In a difficult variant, you score 45, 46%, you will pass. In an easy variant, you score 55, 56%, then you will pass. Because आपका marks will be multiplied by a weighted average marks. कभी कभी स्टूडेंट का 79 मार्क्स आता है, तो स्टूडेंट मेरे को, देयर इज स्टूडेंट who said, sir, how come they give 79? Can't they give one more marks to make me pass? ए भाई, एग्जामिनर ने 79 आपको नहीं दिया है. Examiner has given you maybe 75, maybe 85. But when it is multiplied by the weight of the software, then in that case, the weighted average marks is coming 79. उसमें examiner क्या करेगा? Why we are standing near 80? Why we have not written such answer so that we would be standing at 90 or 100? वो हमें ध्यान देना है. लेकिन weighted average marks is the pass marks, which is out of 150. We need to score weighted average 80 marks. In the exam, for management case study, 1 second. This is past term papers link. I will give in the mail to all of you. Past term papers link. मान लीजिए this is strategic case study, कोई फर्क नहीं पड़ता है. The strategic case study. This is, you can say, the pre-seen information. It is past term papers, not the current term. Past term, any paper. Past term का पेपर है ये, around 2020. The pre-seen information is around 25 to 30 pages. Student need to read those, what I should say, those pages. But it is not comprehension. Ki this paragraph, they will give question and you will answer. Not like that. It is just a background information about a company, about their business, about industry, about the social media, about their financials and everything. Now, when you are in the exam hall, the exam paper, you can give exam sitting in home, you can give exam by going in the exam center. तो आप जब एग्जाम देंगे, यहां पर आपका नाम लिखा रहेगा on the screen, and when you go in the next page, it will be showing you 4 questions. 1, 2, 3, 4. In management case study 4. Each will be 45, 45, 45, 45 minutes. And in every part, there are A, B, A, B, A, B. At least 2 questions will be there. That means 8 questions. In some part, maybe 3 questions, maybe 9.
I will say that 8 to 10 questions. When you go further, this is the first question. This is unseen portion. Some director, somebody is mailing you, somebody is giving you some information. I'm not reading this. And based on this additional information, there are 2 questions. And not this. Based on this additional information, there is some newspaper article also. So you need to read this entire thing and you need to answer these 2 questions in 45 minutes. 45 minutes is reading also, the unseen, the attachment. 45 minutes reading the requirement also. 45 minutes planning the answer also. And 45 minutes writing the answer also. Everything need to be done in total 45 minutes. So I normally think that or say that always. Out of 45 minutes, 7 to 8 minutes, you cannot write anything. You read the unseen, you read the attached material, you read the requirement, you plan in your mind, and then you start writing. Na? So out of 45 minutes, you are getting around 35, 37 minutes to write. Worst to worst, say 35 minutes. And in 35 minutes, you need to write 60% part A and 40% part B. 35 into 60% is 21 minutes. Out of 35 minutes writing time, 21 minutes you will be giving for part A and 14 minutes you will be giving for part B. Understand, 1 or 2 minutes here and there chalega, but you in place of 20 you can't give 30 minutes for part A. Maybe you know well. तो क्या 2 मिनट में आप दूसरा वाला आंसर लिखोगे? No, sir. Once you go forward, this is the writing space where you will type your answer. The Windows features are there, no features are required. चुपचाप type your answers. आपको केवल अपना आंसर टाइप करना है और कोई विंडो फीचर यूज नहीं करना है. When you complete your answer in 45 minutes, whether or not, once 45 minutes over, you are in the second one. Again in the second one, extra scenario, extra questions, extra write-up, attached material. Again you need to write both the answers in next 45 minutes. When you are in the second one, you can't reopen the first one. That is already gone. Every part is opening for you 45 minutes each. Every part. And whatever the answers are there, that you need to write in 45 minutes, those parts. So 45, 45, 45, in total 3 hours. 3 घंटे में you need to read the unseen, you need to read the attachment, you need to read the question, you need to plan your answer, you need to write your answer. And every part has a specific 45 minutes. That means in any part, you cannot take more than 45 minutes time. What will be your structure of your answers? What will be the presentation of the answers? So after that, they have written all the model answers of this variant. Institute has given model answers for all the... These are 6-7 variants. All are 6-7 papers relating to the case study. 6-7 variants. One by one, all papers they have given. And now the model answers for all the variants. Model answer. It is a strategic management case study is also like this. This is the answer for variant 1. These answers have been provided by CIMA for information purpose only. The answers created are indicative of a response that could be given by a good candidate. They are not to be considered exhaustive, and other appropriate relevant responses would receive the credit. CIMA will not accept challenges to these answers on the basis of academic judgment. CIMA Institute ने ये आंसर पब्लिश किया. हर टर्म का जब एग्जाम हो जाता है, after the result they publish the answers. So the public model answers, they are saying that is the CIMA property. But these are not the only answer. A student can have a different opinion. And even the institute is not going to accept any complaint or any challenge from anybody that these answers are correct or not or this. Because these are judgmental. The answers are judgmental. There is no fixed answers. You can have a different opinion. Now in the first question, there were 2 requirements. So they are writing section 1 or section A.
Requirement 1, maybe it was asking about key stakeholders. Now the answer is presented in paragraphs. 1 paragraph, 2 paragraph, 3 paragraph, 4 paragraph. Then the section requirement 2, section B. In the first unseen part, there were 2 requirements. Requirement 1, requirement 2. That is relating to risk register. 1 paragraph, 2 paragraph, 3 paragraph, 4 paragraph. You see the presentation of answer. And this is, they are giving the model answer since 2015. The answers are not like BCom exam, BBA exam, or any exam where you will write Roman 1, 1.1 line, Roman 2, another line, Roman 3, 4, third line, and you are writing 50 points. Let do. The answer, for any paragraph you want to give subheading, you can. But it is, you need to explain that point thoroughly. You need to explain your thought process about particular thing in 1 paragraph. It is a paragraph structure. The paragraph language should be, maybe spelling or grammar mistake doesn't matter, because institute has said that they are not checking grammar or spelling. They are more concerned what you are writing. The examiner should be able to understand. Other persons should be able to understand. So when I give the mock papers or I give the questions in the class, students don't follow this. They write Roman 1, 1 line, Roman 2, another line. और जबकि मैं पहले क्लास में बोल रहा हूं कि आंसर का प्रेजेंटेशन क्या है. आपको पैराग्राफ में आंसर लिखना है, पैराग्राफ का सब हेडिंग देना है, दीजिए, नहीं देना मत दीजिए. कितना लेंथ का आंसर लिखना है? आपके पास 35 मिनट्स है. 15 to 20 words per minute institute is saying should be the speed of typing. अगर मान लीजिए आप बोलेंगे सर टाइपिस्ट बनना है क्या, यू टाइप नाउ on a screen with a keyboard. Looking at the keyboard, you will be able to type 15-20 words in 1 minute automatically. कोई typing speed नहीं चाहिए. But this is, you can say, average speed. So 15-20 words in 35 minutes. 15-20 words will be coming around 1.5 lines with 11 font size. So in 35 minutes, the total length of the answer will be what? Around 50-55 lines. अगर आप ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे 50 into 20 words, 2 लाइन करके approximately maximum 70 lines. But I generally say that 35 minutes में around 55 lines is enough. 50 to 60 lines. 50 to 60 line में in this question, the section A was 60%. So if you are writing an answer of say 55 lines, so 55 का 60% will be in part A, requirement 1. And 40% in part B. Time allocation will be like that. Exactly to nahi, mota moti. If you are writing that much answer, it is adequate. You will say, sir, they are concerned with length or quality. Obviously quality. But if the quantity is very less, then the quality will never come. Quality will come with a minimum level of quantity. अगर आपका आंसर 50 लाइन से भी कम है, मार्क्स कम मिलेगा. और अगर उसमें भी आपने यू आर राइटिंग द आंसर विच इज नॉट रिक्वायरमेंट, विच इज नॉट द रिक्वायरमेंट, तो वो भी नहीं मिलेगा. सो लेंथ ऑफ द आंसर मैटर्स. मोटा मोटी 50 लाइंस, 50 to 60 लाइंस वुड बी द लेंथ ऑफ ईच 45 मिनट्स आंसर, वट एवर नंबर ऑफ पार्ट्स इट हैज. We can say that in our class, how we are going to study. Today is the 31st March. We are going to discuss pre-scene material. Pre-scene, maybe I will be able to complete fully or maybe 80-90%, no problem. Next class will be again on Sunday. If the balance pre-scene discussion left, we will be doing that. And on that, we will be doing core area A and B. Relating to core area A and B, I will be giving you questions by Tuesday. It is under preparation. सर लिखना पड़ेगा. अगर आप 50 लाइंस नहीं लिख सकते तो गड़बड़ होएगा सर. तो जब हम लोग कोर एरिया ए और बी का क्वेश्चंस मैं ट्यूसडे को दूंगा और आपको मैं संडे तक उसका आंसर लिखने बोलूंगा. आंसर जैसे ऑपरेशनल लेवल में लिखते थे लिख कर देना है. बोलेगा सर अभी तो कुछ पढ़े ही नहीं. भाई कोई बात नहीं है. जो आपके पास मेरा नोट्स है, जो आपके पास मटेरियल है, गूगल है, चैट जीपीटी है, मेरा यूट्यूब में वीडियोस है, आप कोई भी आंसर लिखने के पहले एक दिन रिसर्च करिएगा. मान लीजिए आई एम गिविंग यू कोर एरिया ए 3 क्वेश्चंस, तो आप 3 क्वेश्चन के लिए 2-2, 3-3 घंटे पहले रिसर्च कर लीजिए.
उसके बाद आंसर लिखना है विद इन 35-40 मिनट्स ओनली। एक एक क्वेश्चन का आंसर 35-40 मिनट्स, और सबमिट करना है। मैं मॉडल आंसर दूंगा और हम लोग कोर एरिया ए और बी पूरा डिस्कस करेंगे। आपका भी आंसर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपने रिसर्च किया, आपने आंसर लिखा, हमने क्लास में डिस्कस किया, डाउट्स वगैरह क्लियर किया, मॉडल आंसर इवेल्युएट किया, यानी कि कोर एरिया के बारे में हमने अच्छा तरह से नॉलेज ले लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया राइटिंग में। ऐसे करके कोर एरिया ए बी सी डी ई पांचों एरिया को हम 5 क्लास में कवर करेंगे। उस समय आपका स्टडी चल रहा है। उसमें से कोर एरिया डी और ई ज्यादातर अकाउंटिंग है, डी तो पूरा ही अकाउंटिंग है, और कोर एरिया ई भी 50% अकाउंटिंग ही है। और वो मैं ऑलरेडी जो टेक्निकल पार्ट से अनुसार मैं अप्रैल एंड और मई 10 तारीख तक वैसे भी सारा खत्म कर दूंगा। तो नॉर्मली आपका वो अकाउंटिंग एरिया का आपको तो वीडियो वगैरह भी नहीं देखना पड़ेगा अगर आप क्लासेस कर रहे हैं। तो कोर एरिया एबीसी से रिलेटेड ज्यादा मेरे को टेक्निकल बात बोलना है, समझाना है, जो कि हम लोग आने वाले 20 डेज में कंप्लीट कर लेंगे 3 क्लासेस में। तो जब आप ए बी का आंसर लिख रहे हैं, आप ये मत सोचिए मेरे को ये नहीं आता है। आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आंसर 35-40 मिनट्स में ही लिखेंगे। और एक वर्ड फाइल बनाएंगे, गौरव कोर एरिया ए आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का आंसर लिखकर यू विल सबमिट। आई विल चेक, आई विल इवेल्युएट, I will discuss in the class where you need to improve. We will discuss that area in the class. तो आपका उसके ऊपर नॉलेज एक व्यू बन जाएगा। So our objective is to complete this type of study in the month of April. And then in the month of May, we will be doing mock papers. तो मंथ ऑफ May में क्या करेंगे, आपको जब मॉक पेपर देंगे वो कोर एरिया ए बी सी डी ई से मिक्स्ड रहेगा, सब मिक्स्ड जैसे एग्जाम में। And I will be asking, now you cannot refer any chat GPT, any Google, any material. Now write the answer on your own because now you have studied. आप एग्जाम सोचिए आ गया, इट इज ऑन 15th, आप सोचिए 1 मई कोई है। आप वैसे बार बार 2-3 मॉक पेपर का आंसर लिखिए, क्लास में भी टेस्ट लेंगे जैसे ऑपरेशनल लेवल में लिया था वैसे, और आप उनका आंसर्स लिखोगे। इतना होने से मैंने देखा है कोई स्टूडेंट नॉर्मली फेल होता नहीं। The probability of passing the student is 90 to 95% because we are not God. Bad luck किसी के साथ भी हो सकता है। अभी क्लास में यहाँ आप गौरव जी हैं, ऑपरेशनल लेवल में सेम किए थे, रवि जी हैं मैनेजमेंट लेवल में थे, ऑलरेडी इनको पता है। वैसे गौरव जी यू स्टडीड इन ऑपरेशनल लेवल बेटर देन रवि इन मैनेजमेंट लेवल, बिकॉज उन्होंने मैनेजमेंट लेवल में भी थोड़ा बहुत बदमाशी किया था, कुछ कुछ आंसर बाद में लिखे नहीं लिखे, प्रॉब्लम किया था। चलो भैया भगवान भरोसे 80 आ गया, 80 के ऊपर। मान लीजिए गौरव जी लक्ष्य का नम मार्क्स कितना 68 आया, उसने कहा ऑपरेशनल लेवल में। इट्स अ बैड लक, बट लक्स डिजर्व टू पास इन द एग्जाम, दैट वाज अ बैड लक। We can see that normally I have seen in my 2015 to 25 आ रहा है, अब तो यार 10 साल हो गए कि स्टडी पढ़ाते पढ़ाते, और मोटा मोटी मेरे को लगता है मैंने कम से कम साल में अप्रोक्सीमेटली 100 लोगों को तो केस स्टडी पढ़ाया ही है, कम से कम। सो मोटा मोटी साल में अगर 100 करके 9 साल में 900 स्टूडेंट पकड़ते हैं, 900 में से मान लीजिए एग्जाम, सारा डेटा है मेरे पास, 900 में से मान लीजिए 500 लोगों ने एग्जाम दिया, 500 लोग में से मिनिमम से मिनिमम 350 स्टूडेंट पास हुआ है एक बार में। कोई कोई स्टूडेंट हो सकता है दूसरी बार में पास हुआ होएगा, मिनिमम से मिनिमम। और वो सारे स्टूडेंट का एक ही है, they were writing the answers, they were serious, they were evaluating their answers on the model answers basis। वो सारे वही हैं। ज्यादातर जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया वो एग्जाम ही नहीं दिए हैं सर, तो उनका पास फेल आता ही नहीं है। द स्टूडेंट हु डोंट राइट द आंसर्स दे डोंट गिव एग्जाम। रवि जी स्ट्रैटेजी केस स्टडी का एग्जाम अभी तक दिए हैं क्या? याद नहीं आ रहा है मेरे को। इफ यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, मिस्टर रवि, हैव यू गिवन द स्ट्रैटेजी केस स्टडी एग्जाम? रवि रंजन, मेरे ख्याल से दिया नहीं है, और अगर दिया भी होगा तो पास होना डिजर्व करते ही नहीं थे, क्योंकि कोई तो आंसर नहीं लिखा। तो ये थोड़ी ना है कि रवि खराब है, रवि इज नॉट नॉलेजेबल, ही कैन नॉट पास द एग्जाम। व्हाट इज द रीजन ऑफ इज नॉट पासिंग?
or not giving exam, that he is not writing the answer, he is not practicing in writing. सिंपल बात है, पास होएगा ही नहीं। ये बोलने का क्या बात है, एग्जाम का रिजल्ट आएगा उस दिन थोड़ी ना पता चलेगा, पहले से पता रहता है। तो गौरव जी आप ऐसा टेंशन मत लीजिए, आप प्रैक्टिस करिए, जल्दी सोचिए, चेष्टा करिए। आप धीरे धीरे करके अगर प्रैक्टिस राइटिंग में करेंगे, जब तक एग्जाम आएगा 50-55 लाइंस लिख सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट ये सारा आप लिखेंगे। सो आई विल बी गिविंग द मॉक पेपर्स ऑफ कोर एरिया ए एंड बी ऑन ट्यूसडे इवनिंग तक। सो यू ऑल विल बी राइटिंग द आंसर्स बाय संडे। मे बी मैं अगर वेनेसडे तक दिया तो मैं केवल कोर एरिया ए ही लिखने बोलूंगा, बी नहीं बोलूंगा। आई विल बी गिविंग एडिक्वेट टाइम। तो मेरा क्या बोलने का मतलब है, जब आप आंसर लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, फोकस करेंगे 35-40 मिनट्स लिखने में, क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अपने आप आपका नॉलेज बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर स्पीड। बिकॉज ये तो कोई बैलेंस शीट पीएल नहीं बनाना है ना कि एक टेक्निकल बात समझानी है। कैलकुलेटर तो एग्जाम में जरूरत ही नहीं पड़ता है। डिड यू यूज्ड कैलकुलेटर इन ऑपरेशनल केस स्टडी एग्जाम गौरव? क्या ऑपरेशनल केस स्टडी में कैलकुलेटर यूज किया था एग्जाम में आपने? मेरे को नहीं लगता है कोई यूज करता है। कैलकुलेटर ले जाएं नहीं ले जाएं, देयर इज नो यूज, बिकॉज इट्स अ थ्योरी बेस्ड एग्जाम, इट्स अ सब्जेक्टिव एग्जाम, इट्स अ लॉजिक बेस्ड एग्जाम वेयर देयर इज नो फिक्स्ड आंसर। आपको लेवल बनाना है कि मैं जल्दी जल्दी सोच के लिख पाऊं, तो वो सीखने के लिए स्टूडेंट को लिखना पड़ेगा आंसर्स। Then in the 14th April to 28th, we will focus on C and D. Then 21st to 28th, we will focus on C and D balance portion, E portion. So मोटा मोटी जब 5th अप्रैल आएगा हम लोग मॉक पेपर में आ जाएंगे। 5th से लेकर 12th तक और मॉक पेपर करेंगे और फिर आप 15 से 17 के बीच में एग्जाम देंगे। दिस इज आवर स्टोरी एंड दिस आई एम डूइंग एवरी टर्म, दिस इज नॉट द फर्स्ट टर्म। और बिलीव करिए, कैसे मैं आपको सच्ची बताऊं, बिलीव अगर मेरे पे विश्वास है, ट्रस्ट है, मैंने ऐसे नॉर्मली देखा है स्टूडेंट लोग फेल नहीं होते हैं जो आंसर्स लिखते हैं, जो अपने वीक एरियाज पे वर्क करते हैं, आंसर लिखते हैं, अटेंड करते हैं। आज मान लीजिए मैनेजमेंट लेवल में एक ये भी प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है यार। और लास्ट दिन स्टूडेंट, मान लीजिए कल एग्जाम है, मेरे को ऐसे व्हाट्सअप करता है, सर ग्रुप अकाउंटिंग फिर से बता दीजिए, सर गुडविल में मैं यही लिखूंगा, सर एनएस। अरे क्यों यार, कल एग्जाम है, आज आप टेक्निकल पोर्शंस पढ़ रहे हैं, जबकि मैं आपको अलग से क्लासेस दे रहा हूं। भाई नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करो। जो चीज आपको टेक्निकली जानना है, जिसमें प्रॉब्लम होगी, वो क्लास तो दी जा रही है आपको, तो आप उस क्लास को नहीं करोगे तो कैसे मैनेज किया जाएगा यार? आई नो दैट आई कैनॉट कवर इन द केस स्टडी क्लासेस, फॉर दैट रीजन आई एम गिविंग यू फुल स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। बट अगर स्टूडेंट नहीं करेगा तो क्या किया जाए यार, कैसे करें? आज बोल रहा हूं, फर्स्ट क्लास है केस स्टडी प्रीसीन बेस्ड। लास्ट डे जिस दिन एग्जाम होगा उसके पहले दिन एवरी स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस ऑन अकाउंटिंग पार्ट ओनली। आई डोंट लाइक दैट कि पूरा अकाउंट्स पढ़ाने के बाद भी दिस इज द हेल्थ, कि भाई अकाउंटिंग पार्ट में पहले दिन से, अभी जब क्लास खत्म होगी, आई विल बी सेइंग इन द ग्रुप, those who have attended the class or not, or those who are doing the accounting class or not, without accounting technical knowledge you can't pass this exam। मैं ये बोलने वाला हूं, कोई नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है, समझ में नहीं आता है। गौरव जी आप सीरियस हैं, आप मेरी बात मानिएगा। अदर्स दोज हु आर सीरियस, यू जस्ट फॉलो मी, बिलीव मी, whatever efforts we will be putting together, there will be 90 to 95% of yours to pass the exam in one go, believe me। 90 to 95% चांस है कि आप एक बार में एग्जाम पास कर लेंगे। बिकॉज बैड लक गुड लक थोड़ा सा भगवान जी होते हैं, उतना हम लोग किसी का खराब नहीं किए तो नहीं होएगा बैड लक। और आंसर लिखने के टाइम पे कभी भी कोई चीज रेफर नहीं करेंगे, आप रिसर्च करिए, बट वाइल राइटिंग द आंसर राइट इन योर लैंग्वेज विथ फुल माने ओन सेटअप। कोई चीज देखकर कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। देयर आर स्टूडेंट हु डोंट हियर दिस, दे बिकम हीरो इन द क्लास बाय कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम समवेयर। दे विल बिकम जीरो इन द एग्जाम बिकॉज देयर प्रिपरेशन इज नॉट गुड। बुकिश लैंग्वेज और अपना खुद का लैंग्वेज अलग होता है। योर लैंग्वेज, द ग्रामर, द स्पेलिंग मिस्टेक विल बी हैपनिंग, थोड़ा अच्छा नहीं होएगा।
लेकिन अगर बुकिश लैंग्वेज कहीं से कॉपी करेंगे तो वो तो बहुत सुंदर रहेगा, वो समझ में आ जाता है. देयर आर स्टूडेंट्स इन मैनेजमेंट की स्टडी स्टडिंग फॉर 1 year and writing always answer copy pasting from somewhere. Some of the students are writing 5, 5, 6 pages answer. I am continuously telling them कि भाई 35, 40 minutes में can you write 5 page? No, they are not hearing. मतलब प्रिपरेशन करने के बाद भी तो गड़बड़ होएगा ना. What is the solution for that? Nothing. सुनते नहीं है बात, क्या किया जाए. So in nutshell we can say that प्रीसीन मटेरियल स्टडी करना है, मॉक पेपर्स प्रिपेयर करना है, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे दोस क्वेश्चन आंसर यू नीड टू सबमिट, इवैल्यूएट विद द मॉडल आंसर्स, स्टडी द अकाउंटिंग पार्ट प्रॉपरली, practice in writing. Whenever you write the answers, write in a time frame bound environment, 35 to 40 minutes. पासिंग क्राइटेरिया है 150 में 80 मार्क्स बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज स्कोर. 64 भी ज्यादा आ गया रवि जी, सिंस मैनेजमेंट की स्टडी का एग्जाम दिया हुआ था तो फीलिंग था, नहीं तो 64 भी नहीं आना चाहिए था आपका स्ट्रैटेजी की स्टडी. बोलेगा सर खराब बोल रहे हैं, सच्ची बोल रहा हूं सर, आप पढ़ाई नहीं किए थे यार. तो 64 स्ट्रैटेजी की स्टडी में तो अच्छा, 60 के ऊपर मींस गुड स्टूडेंट. So mean to say that if you follow what is the requirement of this exam, how to prepare for the syllabus, practice in writing, practice in time framed environment, do mock papers, do your research, write the answers, and study regularly for 2 hours. Because in the study, every day some write-up is there. Every day, 1 hour, maybe you are reading something, analyzing something. 1 hour you need to type, you need to write. हर दिन आपका 2 घंटा इसमें जाएगा. हर दिन 2 घंटा पढ़ना है, इतना ही पढ़ना और नहीं. इतना से हो जाएगा. बिकॉज दिस इज नॉट टेक्निकल स्टडी. अगर टेक्निकल स्टडी होता तो ज्यादा देर पढ़ना पड़ता. टेक्निकल स्टडी होता तो ऑलरेडी जो लोग मान लीजिए सीमा की स्टडी, मैनेजमेंट की स्टडी का अकाउंटिंग क्लास के साथ पढ़ते हैं, उनको तो टेक्निकल पढ़ना है, उनको तो आपसे ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, उनका कोई ऑप्शन नहीं है. फॉर देम आई एम सेइंग 180 आवर स्टडी, एंड फॉर यू आई एम सेइंग 100 आवर स्टडी. मोटा मोटी आई से अराउंड 100 आवर स्टडी फॉर योर टाइप ऑफ स्टूडेंट. सीमा के लिए मैं 100 घंटे पढ़ने बोलता हूं भाई, अप्रोक्सीमेटली. यानी कि उनको तो आपसे डबल पढ़ना है, बिकॉज टेक्निकल है भाई उनका. टेक्निकल स्टडी, इफ यू टेक्निकली डोंट रिवाइज 3, 4 टाइम्स यू कांट रिप्रोड्यूस. बट प्रैक्टिकल तो आपके दिमाग में है, बट प्रैक्टिकल को भी एग्जाम रिलेटेड पढ़ना तो पड़ेगा ना. दैट्स अकॉर्डिंग टू मी द बेसिक अंडरस्टैंडिंग relating to CIMA exams, the pre-seen material, the exam structure, the passing criteria, what you need to study, how we will cover in our classes and everything. Relating to that, if anybody has any specific doubt, I'm giving 4, 5 minutes because the chat operate in YouTube slightly late. So if anybody has any specific doubt, please ask. Otherwise, we will start discussing the pre-seen material. Anybody has anything to ask relating to general common knowledge of CIMA management case study? The exam structure, the pre-seen, the exam format, how to prepare, what is the passing criteria, how to write the answers, when is the next exam and all that, everything, anything. क्या रवि जी कुछ बोलना है?
I'm waiting for all of you for next 3 minutes more. If anybody has anything to ask, you need to chat only. Last 1 minute. Okay. What I'm doing that key for the pre-scene based discussion, I am giving a separate link to all the registered students only, because I don't have those who are not registered, their email ID and all that. And we are doing a class purely on Zoom, not on YouTube. Why? What is the reason behind this? So that we can engage each other. We can communicate in voice also, audio also, and the discussion will be at next level. So for that reason, I will upload that on YouTube also. Those who are not my registered student, that also I will upload on YouTube. You don't need to take tension. But उसमें मेरे को engagement ज़्यादा चाहिए, discussion और ज़्यादा चाहिए. Here the chat is coming slightly slow. At the same time, audio is not possible from the student side. For that reason, I am giving a separate link to all my registered student of MCS, Zoom link, and you join from that now only. After 2 minutes only, you join from that. And we will be, when you join from Zoom, please remember, in the link, you need to type your name, your email ID, your mobile number. Then it will allow you to go inside. And then it will be asking, use your computer, laptop, audio, video. Allow that and then join in the class so that you will be able to hear me. Okay. I'm not doing from here, from what I should say, from YouTube, because of less communication, because chat is coming very late and audio student cannot see. And case study teaching is more and more interaction, discussion. So I want the audio of the student also. For that reason, I'm doing that. Okay. So for YouTube live, this is over. Whatever portion I will be discussing in the normal class, that also I will upload in the YouTube. Don't worry. Okay. Thank you. Tada, bye bye.